I want to come to some poems from एक किताब है जो मैं और तर्जुमा कर रहा हूँ और उसके दो रुख हैं। एक तो है कर्ज चुकाने का, एहसान चुकाने का जो पवन जी का मुझ पर है, और दूसरे बदला लेने का कि आपने जिस तरह से मेरी नज़्में ट्रांसलेट की है मैं भी करूँगा। उनकी एक किताब है युधिष्ठिर और द्रौपदी। हमारी माइथोलॉजी में हमने इन किरदारों के नाम सुने हैं, इन कैरेक्टर्स के नाम हमारी बचपन से गुजरते हैं, लेकिन उनकी नौयत, उनकी शक्ल सूरत, उनके रिलेशनशिप, उनके रिश्ते हमारी ज़िंदगी से किस तरह मुताल्लिक़ हैं, किस तरह ताल्लुक़ है, उनका कनेक्शन हमारी ज़िंदगी आज की ज़िंदगी से क्या है, वो समझ में नहीं आता, पता नहीं चलता जब हम बड़े हो रहे होते हैं। माइथोलॉजी सिर्फ माइथोलॉजी की तरह पड़ी रह जाती है। महाभारत पढ़ी है, महाभारत की तरह कहानी की तरह पढ़ी है, लेकिन महाभारत में बसे वो कैरेक्टर्स वो किस तरह आज के दौर के साथ हमारे रिलेट करते हैं, या वो इतनी बड़ी पोथी, ये शास्त्र क्यों सदियों के बाद सदियों तक जिंदा रहते हैं, उनमें कोई और बात भी है कि वो आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। उसमें एक बहुत बड़ा काम किया है पवन जी ने कि उसमें से वो रिलेशंस, वो रिश्ते ढूंढ के, तलाश करके आपकी ज़िंदगी के साथ कैसे जुड़े हुए हैं उनको ह्यूमनाइज कर दिया, उनको फिर आपकी सतह पे ला के खड़ा कर दिया। ये बहुत बड़ा काम किया उन्होंने युधिष्ठिर और द्रौपदी ने। युधिष्ठिर और द्रौपदी की बैकग्राउंड बहरहाल आप जानते हैं, लेकिन युधिष्ठिर और द्रौपदी के दरमियान वो रिश्ता जब चारों भाइयों के शव पड़े हैं उस एक हौज के किनारे, जो यक्ष के काबू में है, जो यक्ष की मलकियत है, और वो उनको पानी पीने के लिए इजाज़त नहीं देता कि जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे, और चारों भाई अपनी तैश में पीते रहे। उन्होंने पानी पीने की कोशिश की और मारे गए। युधिष्ठिर और द्रौपदी अकेले खड़े हैं, अकेले बच गए हैं, और इस दौरान इन दोनों के जहन में क्या क्या गुजर रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम युधिष्ठिर और द्रौपदी एज टू ह्यूमन बींग्स अलोन, एज हस्बैंड वाइफ सामने खड़े हैं। वो हस्बैंड और वाइफ का अस्तित्व, उसकी हस्ती क्या है, वो उसमें सोनेट्स की शक्ल में उन्होंने इस किताब में लिखा था। अब मेरा जी चाह के इसका तर्जुमा होना चाहिए। और एक बात जो मैंने उसमें कही थी पवन जी से कि मुझे एक बार लगा मैं फिर से मिल्टन पढ़ रहा हूँ, इतनी मुश्किल अंग्रेजी लिखी आपने, बट इट्स अनदर ग्रेट एपिक, ग्रेट पोएम like The Paradise Lost, which I had read in my... Yeah. I think also college. Because what you see in this is it that contemporary relevance उसकी और perennial relevance. Yeah. तो मैं चाहता हूँ कि उसमें से कुछ नज़में पवन जी के साथ पढ़ी आए, और पवन जी से कहूँगा कि वो सिलेक्ट करके मुझे बताएं कौन सी पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा तो ओरिजिनल आप पढ़िए और मैं ट्रांसलेशन पढ़ूँ। Roles will be reversed. This morning we were sitting having a cup of coffee at Char Dukan, and we were wondering which poems to read, because you know Gulzar Sahab says he and I have done this, what he calls the Jugal Bandi, in so many places now. I tell him he's the maestro, I am the tabalchi, and we go together. And he says he's Gulzar Ali, I am Pawan Ali. So we go. And what am I doing in between? And thanks to Steve that he has invited the Ali brothers here. Ali brothers. So Steve invited the Ali brothers. So we were thinking of what to read. And I must say, I mean, just sharing an anecdote, Gulzar Sahib, if you'll allow. Some 10, 15, 20 days ago, I can know, a few weeks ago, Doordarshan invited me and Gulzar Sahib to just talk to each other. They said there's no time limit and we can't tell you what to talk about. We want you to sit in front of each other and talk. And so we were at Doordarshan sitting having a cup of tea with the director. And he kept asking me, okay, what's the cue? What is going to be your first
opening? And I said, I don't know. And he would ask Gulzar Sahab, and he said, I have no idea, Pawan will lead us on. And this is how we began, with neither of us having discussed even once what is going to be the framework of the discussion. And then since it was open-ended, we got so engrossed talking to each other. It crossed an hour. In between there was an earthquake. The crew ran away. And we kept talking to each other. Yeah. So we were discussing at Char Dukan what to read from this book. Gulzar Sahab has translated it. As I said to him, I was impressed by a higher creativity. And his translation is truly beautiful. This is a poetic muse. It's not based on fact, but it's an intrusion in the hypothetical lives and relationship of two central characters of the Mahabharata, Yudhishthir and Draupadi. She loved Arjun. She had to marry all 5 brothers, and Yudhishthir had her first. She was a strong woman. She was a woman who had her own point of view, self-willed. Yeah. And Yudhishthir, who was not her lover or her first choice, became first her husband. What was the relationship between these two? I wrote it when I was posted in Moscow in the womb of the Russian winter. And we were trying to see, I think my wife tried to look at what poem Steve would fit in with the mountains. So there were 2 stanzas, 2 sonnets which we took. With your permission, I'll read one of them because there is a reference to a mountain. This is 89. Your page. Page 37. 37. Okay. We'll read that, the second one. Right. These are rhymed sonnets, so their eyes meet for a moment purely by chance. His are evasive, hers accusingly child. Bridges can be built even in a glance if 2 people seek to close a divide. Who after all can relinquish desire with ease? Who after all can relinquish desire with ease? A sculptor without tools will still caress a stone. Lovely. This is what listener. Please read these lines again. And imagine, just catch the image which is using there. Bridges can be built even in a glance if 2 people seek to close a divide. Who after all can relinquish desire with ease? A sculptor without tools will still caress a stone. No one can capture the formless breeze. Yet man will try, though his effort is forlorn, the very breeze passing by, formless airborne. O Yudhishthir, the plurality of the banyan is fictitious. The banyan tree. O Yudhishthir, the plurality of the banyan is fictitious. From a distance, it merges with the same earth and sky. Lovely. And even in the monsoon, the clouds can be capricious. Some fields are flooded, while others remain dry. Given a chance, O Kaunteya, a caged bird will fly. Given a chance, O Kaunteya, a caged bird will fly. And now the reference to the mountain. And however aloof a peak, it cannot its base decry. Beautiful. Lovely. Beautiful. Lovely.